So doing decoupage on glass bases are absolutely fun. Welcome back to my channel, friends. This is Sonia here, and do check our website growingcraft.com for all craft supplies and material. Now getting back to tutorial, so आज हम करने वाले हैं decoupage art glass के ऊपर. So yes, हमने और भी बहुत सारे वीडियोस किए हैं, प्लीज़ डू चेक दैट ऑल्सो. यहाँ पर पहले मैं अपने बेस को प्रेपअप करूँगी विद जेसो. जेसो यूज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है उसका मैंने एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल शूट किया है, प्लीज़ डू चेक दैट. वो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बताएगा कि वाई जेसो इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड येस, यहाँ मेरे इस ग्लास के ऊपर आई एम गोइंग टू डू गुड 2 coats ऑफ जेसो एंड आई एम यूजिंग माई स्पंज रबर. दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल वॉट यू कैन हैव फॉर हैविंग इवन सरफेस फॉर योर decoupage वर्क. सो अगर आपके पास स्पंज रबर नहीं है, आप पेंट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ट्राई आउट दी स्पंज रबर. दे आर वन ऑफ दी बेस्ट. सो ऑफकोर्स जेसो करने के बाद वी हैव टू लेट इट ड्राई कम्प्लीटली टिल इट इज़ ड्राइंग आउट. यहाँ पे हम चूज़ करें हमारा decoupage napkin. सो यू कैन इवन टेक योर decoupage papers and what not. You can try out all the different variations whatever you want. So यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक छोटा सा पोर्शन decoupage napkin का. So there are beautiful napkins on our website, you guys can check that. And once you try out, you will know that yes, using decoupage napkin, decoupage papers are so much fun. So napkin की प्लाइज निकालने के बाद अब हमें स्टिक करना है हमारे decoupage glue से. And for this I am using my Mod Podge. You can even use the decoupage glue. जो भी सप्लाइज मैं यूज़ कर रही हूँ उनके लिंक्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं. सो decoupage glue लगाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश एंड आई एम गोइंग टू स्टिक माई नैपकिन वेरी नाइसली हियर. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई रिंकल्स या कोई बबल्स आने ना दें. यू हैव टू प्रेस इट वेल. जस्ट इन केस अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक दैट, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ वीडियो एंड ट्यूटोरियल्स देयर एंड दे आर एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू गाइज. So after sticking my napkin, I am going to seal it up with my varnish ताकि हम जो भी color blending and spray work करेंगे, it is not going to ruin my project. That is very important. So यहाँ पर पहले हमने हमारा decoupage glue लगाया है, then we dried it. अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं हमारा 1 coat of varnish and then again we have to dry it. Now it is time to start with the color blending. So यहाँ पर color blending करने के लिए मैं पहले यूज़ कर रही हूँ plain water. एंड अपने सर्फेस को थोड़ा वेट करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रिप अ लॉट ऑफ कलर्स एंड sprays here. You can use your chalk paints also. So whatever the supplies I'm using, their links are mentioned in the video description box. Please do check that. So this is an easy way of color blending. Do try this out and they look absolutely amazing with whatever the kind of supplies you are doing it. Now of course with the color blending I always say कि massive stamping भी equally ज़रूरी है. Why you need to check this tutorial till the end, because यहाँ पर तो color blending हो गया and then इसके बाद I had to do my massive stamping and I'm using my permanent ink. And now you will see how beautifully the stamp is actually merging my layers so well on my glass. So of course you need to make sure that you use a permanent ink pad. Dye based ink pad does not work with your decoupage and mixed media art. And after doing this I'm just going to do my coat of varnish and we will be done. So stamping में यहाँ पर मैं सिर्फ यूज़ कर रही हूँ scripts हैं, but if you check our collection there are a lot of designs available. You can go for the hexagon, the triangle shape, the square shape, the circular one and the mini script. Even in the script we have a lot of varieties, so you guys can definitely check that. And all these are available on our website at growingcraft.com. So after this we have to seal it up, and seal करने के लिए यहाँ पर मैं use कर रही हूँ varnish. You need to have good 2-3 coats of varnishes and then your project is done. So I really hope that you guys enjoyed this video. Do let me know your feedbacks in the comment section and do check our website, do check our YouTube channel, do check us out on Instagram and do leave your feedback. So thank you so much for watching guys, and take care and bye bye. Bonheur est passé à 2 doigts de nos lèvres, 2 doigts si fins que j'ai presque pu le goûter.